Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Today we are going to do chapter number 24 from Guyton. Unit 4 का last chapter है और फिर हमारा cardiovascular series पूरी complete हो जाएगी. So the title of the chapter is Circulatory Shock and some basics of its treatment. So shock बहुत ही important clinical presentation है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के chapter में. Circulatory shock basically means generalized inadequate blood flow throughout the body to an extent that the body tissues are damaged. Yani for any reason there is so much decrease in the blood supply to the organ. So say for example this is one particular organ of your body, any organ. ये organ stomach भी हो सकता है, skin, whatever. There is blood supply going to that organ और अगर for any reason the blood supply is so diminished कि इस organ को oxygen नहीं मिल रही और blood supply इतना कम हो गया है कि यहाँ changes of damage start हो गए. This condition is then known as shock. So basically it's the problem with the blood supply. Okay, especially too little oxygen is there. So ये major मसला है. Even the cardiovascular system itself, the heart musculature, walls of the blood vessel, vasomotor system and other circulatory parts begin to deteriorate. क्योंकि जैसे बाकी तमाम body parts को blood supply जाती है, ऐसे heart को भी तो blood supply जाती है by the coronary vessel. और अगर coronary vessel में भी blood flow कम है तो जाहिर है heart के muscles को भी blood supply कम मिलेगी. और जब इन हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन कि हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो शॉक फर्दर एग्रेवेट होगा. सो इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली वर्स. ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सम फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ शॉक. शॉक यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट. अभी जितना हमने डिस्कशन किया कि ब्लड सप्लाई रीचिंग टू द टिश्यूज विल बी डिमिनिश्ड, जिसका बेसिकली टेक्निकल वर्ड्स हम ये यूज करते हैं कि देयर विल बी रिड्यूस कार्डियक आउटपुट. देयरफॉर एनी कंडीशन दैट रिड्यूसेस द कार्डियक आउटपुट विल एक्चुअली इज पोटेंशियली एबल टू कॉज शॉक, है ना. और अब दो पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको क्या वजह है कि ब्लड कम पहुंचेगा टिश्यूज तक. एक वजह तो सिंपल ये हो सकती है कि हार्ट काम नहीं कर रहा. So if the pumping capacity of the heart is disturbed, so that's the first thing, the cardiac abnormalities that decreases the ability of the heart to pump. तो अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. और ये कोई भी ऐसी रीजन हो सकती है जिससे हार्ट एज अ पंप अफेक्ट होगा. हमने भी पूरी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी पढ़ रखी है तो आपको पता है कि अगर हार्ट में कोई भी इशू सच एज वैल्वुलर प्रॉब्लम्स हैं या एरिथमियाज हैं या और कोई प्रॉब्लम है हार्ट में, हाइपरट्रॉफी है, सो फॉर एनी रीजन हार्ट कैन एंटर इन अ फेज जहां वो ठीक से पंप नहीं करेगा तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज्ड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कार्डियोजेनिक शॉक. सो कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है ऐसा शॉक जिसमें कार्डियक आउटपुट कम है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द हार्ट इटसेल्फ. अच्छा, दूसरा फैक्टर जो शॉक की मेन कॉज बन सकता है वो है डिक्रीज वेनस रिटर्न. देखो ये आपने अब पूरी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में सबक सीख लिया है कि हार्ट वही पंप करता है जो इसमें आता है. सो व्हाटएवर कम्स इन गेट्स आउट, ऐसे ही होता है ना. सो व्हाटएवर कम्स इन इज द प्रॉपर्टी एंड फिनोमिना ऑफ द वेनस रिटर्न एंड व्हाटएवर गेट्स आउट इज व्हाट वी कॉल द कार्डियक आउटपुट. तो अगर कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी पैथोलॉजी है, कोई भी ऐसा रीजन है जिससे ये वेनस रिटर्न ही कम हो रहा है. अब वेनस रिटर्न कम हो सकता है इन सर्टेन सिनेरियोज से. फॉर एग्जांपल आपका जो पेरिफेरल वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड है. अगर वो इतनी डायलेटेड है तो ब्लड इन्हीं में पूल होके रहेगा और हार्ट तक मूव नहीं करेगा. सो इफ दे आर टू मच डायलेटेड द वेनस रिटर्न विल रिड्यूस. वेनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड शॉक की कंडीशन. सो anything which reduces the venous return also decreases the cardiac output because heart cannot pump the blood that does not flow into it. यानी हार्ट में जो आएगा वही बाहर निकलेगा ना, ये फिनोमिना. The most common cause of decreased venous return is the diminished blood volume, but venous return can also be reduced by decreased vascular tone. So decreased vascular tone का मतलब है vasodilation. Diminished blood volume का मतलब है, say for example if the person has had an accident and the person is hemorrhagic, bleeding हो रही है उस बंदे की तो blood lose. अब सिस्टम में blood है ही नहीं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में the blood is reduced quantity, तो कम blood हार्ट तक आएगा, कम blood आएगा तो कम blood निकलेगा. ओके, सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. अभी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को हमें एक्सपैंड करके इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है. सो व्हाटएवर वी विल डिस्कस टुडे विल आइदर बी एन इशू विद द हार्ट
और विल आइदर बी एन इशू विद द डिक्रीज वेनस रिटर्न, क्योंकि यही दो वजूहात हैं जिनकी वजह से शॉक होता है. सो मैं बार बार आपको ये रेड मार्क्स याद दिलाऊंगा कि 2 रेड मार्क्स हैं जो आपने इस पूरे चैप्टर में याद रखने हैं, क्योंकि इनका जिक्र बार बार होगा. पहला रेड मार्क क्या है? कार्डियक इशू, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम, और दूसरा इशू है वेनस रिटर्न का प्रॉब्लम. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी शॉक विदाउट डिमिनिश. ये एक स्पेशल फिनोमिना है जिसमें शॉक तो होता है लेकिन कार्डियक आउटपुट सब्सटैंशियली रिड्यूस नहीं होता. सो ओकेजनली जनरल कॉन्सेप्ट मैंने देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें. हमने ये बात की कि जो कार्डियक आउटपुट है ये कम होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग शॉक बिकॉज टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंच रहा. अब ये क्या बला है जिसमें कार्डियक आउटपुट जो है दैट स्टेज नॉर्मल लेकिन फिर भी शॉक है. सो ओकेजनली द कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल और इवन मोर देन नॉर्मल, yet the person is in a state of circulatory shock. The situation can result from the following: excessive metabolic rate. So a normal cardiac output is inadequate. So for example, ये एक टिश्यू है और ये आपका प्यारा सा हार्ट है जिसका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है, यहाँ कोई मसला नहीं है, हार्ट इज ओके, वेनस रिटर्न इज ओके. लेकिन ये जो टिश्यू है इट हैज गॉन मेटाबॉलिकली टू मच एक्टिव. तो अगर ये बहुत एक्टिव हो गया है तो अब जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो इसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए इनफ नहीं है. दैट्स व्हाई देयर मे बी अ कंडीशन ऑफ शॉक. एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न. समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्लड निकल ठीक ठाक रहा होता है हार्ट से, लेकिन देयर आर शंट्स एंड फिस्टुलास, तो ब्लड इधर उधर चला जाता है, ऑर्गन तक नहीं पहुंचता. तो ऑर्गन को ऐसे लगता है कि मेरे पास तो ब्लड सप्लाई कम हो गई. तो इन दोनों ही कंडीशन में जो मैंने आपको बताई, यानी टिश्यू की मेटाबॉलिज्म अगर रेज हो जाए या कोई एबनॉर्मल वैस्कुलर चैनल्स इस्टेब्लिश हो जाए, तो इन दोनों ही कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट विल बी ओके, इट विल बी नॉर्मल, बट देयर विल बी रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन. द स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ शॉक आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर. अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में. फॉर प्रेजेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल ऑफ देम लीड टू इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स to the critical tissues and critical organs, as well as inadequate removal of cellular waste. So whenever there is a condition of shock, that means one thing, कि जो भी organ है जो शॉक की सिचुएशन में है उस ऑर्गन तक एडिक्वेट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवरी नहीं हो रही बिकॉज ब्लड नहीं पहुंच रहा. दूसरा प्रॉब्लम ये होगा, सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1, कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड. द अदर प्रॉब्लम वुड बी कि दिस टिश्यू इज ऑब्वियसली डेवलपिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. इन वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाना भी आपके ब्लड ही का काम था ना, अब वो भी नहीं हो रहा. सो इफ दिस इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग देन देयर इज accumulation ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर इज लेस डिलीवरी. सो डबल प्रॉब्लम. ओके. सो व्हाट हैपेंस टू द आर्टेरियल प्रेशर इन द सर्कुलेटरी शॉक? ऑब्वियसली अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो दिखने में ऐसा लगता है कि जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो शायद ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. सो इन माइंड्स ऑफ मैनी फिजिशियंस द आर्टेरियल प्रेशर लेवल्स इन प्रिंसिपल is the principal measure of the adequacy of the circulatory function. However, arterial pressure can often be misleading. So usually it is the right concept that if there is shock, there is decreased cardiac output, so there is concomitant decrease in the blood pressure, arterial pressure. But sometimes it can be misleading. So there can be a scenario, there may be at times a person may be in severe shock, लेकिन आर्टेरियल प्रेशर उसका नॉर्मल है. ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं. एट अदर टाइम्स द आर्टेरियल प्रेशर कैन फॉल हाफ ऑफ द नॉर्मल बट द पर्सन हैज नॉर्मल टिश्यू एंड देयर इज नो शॉक. In most types of the shock, especially shock caused by the severe blood loss, the arterial blood pressure decreases. So that's the most common scenario, and this is the one which we logically think as well. Now, tissue deterioration is the end of the result of the circulatory shock. Obviously, एक tissue है, उसको shock की condition में blood नहीं पहुंच रहा. Ultimately, it will lead to deterioration. Once circulatory shock reaches a critical state of severity, regardless of its initiating cause, the shock itself leads to more shock. Wow! Because oxygen नहीं पहुंच रहा, waste product निकल नहीं रहा, तो ये जो tissue है, it will degrade. That is, inadequate blood flow causes body tissues to begin deteriorating, including the heart and the circulatory system. Now, think of the consequences of shock on heart itself. अब heart का मामला ये है कि ये अगर blood pump नहीं कर रहा, यानी there is a situation of shock, और shock की वजह से खुद heart को भी blood नहीं पहुंच रहा, तो ये heart जो पहले ही शॉक की कंडीशन में है, यानी ठीक से पंप नहीं कर रहा, अब इसको मजीद ब्लड नहीं मिल रहा. जब इसको ब्लड नहीं मिलेगा तो ये फर्दर पंप नहीं करेगा. सो द सिचुएशन विल वर्सन. इसीलिए हम कहते हैं देयर विल बी प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ द हार्ट.
It is with this late stage of circulatory shock that we are especially concerned, because appropriate physiological treatment can often reverse the causes of shock, and death can be prevented. Therefore, immediate intervention is very, very important. अच्छा, there are some stages of shock जो आपको theoretically पता होने चाहिए. There is a non-progressive stage, sometimes also called the compensated stage, in which the normal circulatory compensatory mechanisms eventually cause full recovery without help of any added therapy. So, for example, if the person develops shock, the sympathetic system kicks into it, and there are reflex mechanisms to restore the function ताकि shock को overcome करें. This is known as a non-progressive stage. तो ये खुद से ठीक हो जाता है, बंदे को कोई दवाई की ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती. Then the second stage is a progressive stage, in which without therapy the shock becomes steadily worse until death occurs. So यहाँ पे अगर आपने therapy नहीं दी, it will become worse. This is called progressive stage. Then irreversible stage होता है जिसमें आप थेरेपी दे रहे हैं तब भी मामला हाथ से निकल गया. So in which the shock has progressed to such an extent that all form of known therapy are inadequate to save the person's life, even though for the moment the person is still alive. So 3 stages हैं. Non progressive मतलब बॉडी आपकी कॉम्पनसेट कर रही है. प्रोग्रेसिव यानी अगर आप दवा दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, सो इट बिकम्स स्टेडली वर्स. फिर भी थोड़ा खराब होता रहेगा दवाई के साथ भी, बट स्टिल दवाई से काबू में है. इरिवर्सिबल स्टेज का मतलब ये है कि आप कोई भी दवाई दो वो काम नहीं कर रही. ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए. अब मुझे बात करनी है आपसे कि देयर आर सर्टेन कॉजेज ऑफ शॉक ना, वो हमें वन बाय वन कॉजेज डिफरेंट डिस्कस करने हैं. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज शॉक कॉज्ड बाय हाइपोवॉलीमिया, यानी ये ऐसा शॉक है जिसमें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में the volume of the blood is decreased. So if the volume is decreased, this is what we call hypovolemia. और ये इसकी एक बहुत common scenario है hemorrhage. So if the person, say for example, has gone under an accident and there is severe bleeding, which is what we call hemorrhage, तो hemorrhage की वजह से blood volume कम होगा. blood volume कम होने से heart के पास blood आने वाला यानी वेनस रिटर्न. मैंने आपसे कहा था ना कि 2 फैक्टर्स हैं जो हमेशा आपको शॉक में सोचने हैं, 2 रेड फैक्टर्स. एक था कार्डियक फंक्शन और दूसरा था वेनस रिटर्न. तो इस वाले सिनेरियो में यानी हाइपोवैलेमिक शॉक में या हेमोरेजिक शॉक में हार्ट तो ठीक काम कर रहा है, हार्ट इज ओके, बट ब्लड नहीं है. ब्लड नहीं है तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, और वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो शॉक की सिचुएशन डेवलप होगी. सो हाइपोवॉलीमिया मीन्स डिमिनिश ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है. हेमोरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज. हेमोरेज डिक्रीजेस द फिलिंग प्रेशर ऑफ द होल सर्कुलेटरी सिस्टम हैज नाउ रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड फिलिंग प्रेशर, एंड देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट फॉल्स बिलो नॉर्मल. अच्छा, अब कुछ सीरीज ऑफ हेडिंग्स हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअली पूरी हेडिंग में एक बेसिकली टेक होम मैसेज हुआ करेगा विच वी हैव टू डिस्कस. सो फॉर एग्जांपल ये पहली हेडिंग, रिलेशनशिप ऑफ ब्लीडिंग वॉल्यूम टू कार्डियक आउटपुट. इसमें सिंपल जो बात समझने की है वो ये कि ब्लीडिंग वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा यानी जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कार्डियक आउटपुट उतना ही कम होगा, एंड ऑब्वियसली प्रेशर इन द आर्टरीज भी कम होगा. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस परसेंटेज ऑफ द टोटल ब्लड रिमूव्ड, या इसको आप ऐसे समझेंगे द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड लॉस, यानी कितना ब्लड लॉस हुआ है. अगर 10% ब्लड लॉस होता है तो यू सी 0% ब्लड लॉस, दैट्स द नॉर्मल पॉइंट, और नॉर्मल पॉइंट पे ये है आर्टीरियल प्रेशर. वाई एक्सिस पे वी हैव द आर्टीरियल प्रेशर है. सो इफ देयर इज नो ब्लड लॉस, द आर्टीरियल प्रेशर इज कंसिडर्ड नॉर्मल. 10% अगर ब्लड लॉस होता है तो आर्टीरियल प्रेशर में इतना चेंज नहीं आता, बट 10% के बाद जैसे जैसे ब्लड लॉस बढ़ रहा है, देखें 20% जब ब्लड लॉस हुआ तो आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया, 30% जब ब्लड लॉस हुआ तो आर्टीरियल प्रेशर और कम हो गया, एंड व्हेन देयर इज अबाउट 40-50% ब्लड लॉस देन द आर्टीरियल प्रेशर गोज डाउन टू 0. सो दैट्स व्हाट इट इज कि जितना ज्यादा ब्लड लॉस बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर कम होगा. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस टाइप ऑफ थिंग कि जितना ज्यादा आप ब्लड लूज करेंगे उतना ब्लड प्रेशर कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, एंड दैट्स व्हाट द ग्राफ इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. 10% तक देयर इज नो नोटिसेबल डिफरेंस, बट आफ्टर 10% देन यू 40 to 45-50% पे there will be fall of arterial pressure and cardiac output to almost 0. Okay, so this is how you interpret this graph. So between 40 and 50% of the blood removed, यानी अगर किसी की बॉडी में 5 लीटर ब्लड है और इस 5 लीटर से रफली अराउंड 2-2.5 लीटर ब्लड लूज हो गया, hemorrhage accident, then the cardiac output and the blood pressure will go down to 0. So that's a fatal condition.
अच्छा, अब इस हेडिंग का टेक होम मैसेज ये है कि whenever the person enters into a state of shock, one system that immediately kicks into play is the sympathetic system. Sympathetic drive फौरन से increase हो जाती है, and the purpose of sympathetic drive is to actually compensate for the shock. So that is what the job is. The decrease in the arterial pressure after hemorrhage, as well as decrease in the pressure in the pulmonary arteries and veins, causes a powerful sympathetic reflex. और ये हमने ऑलरेडी पिछली अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया है. और फिर sympathetic system क्या करता है? Sympathetic system does a few things to the body. Number one, the arterioles constrict in most parts of the systemic circulation, thereby increasing the total peripheral resistance, ताकि pressure पीछे बढ़े arterial tree के अंदर. Sympathetic system also constrict the veins, और जब veins constrict होंगी, इनका size कम होगा veins का, तो blood will go more into the heart. So more blood going into the heart, more cardiac output. Then the third thing sympathetic system does is it directly acts on the heart. So if this is your heart, the sympathetic system directly acts on it, and it increases the pumping rate from a normal of 70-72 to as high as 160 and 180. So ये तीन effects जो हैं sympathetic system के, all of them are trying to increase the cardiac output. They are trying to increase the contractility of the heart. They are trying to increase the venous return to the heart. So दो लाल डब्बे याद हैं, cardiac issues and venous return. So sympathetic system जो है वो venous return को भी बढ़ा रहा है. It's increasing the venous return. It's also increasing the cardiac activity because it is directly sympathomimetic. In the absence of sympathetic reflexes, only 15 to 20% of the blood volume can be removed over a period of 30 minutes before the person dies. So ये जो आप देख रहे हैं, पॉइंट ये है कि अगर sympathetic system काम कर रहा है तभी हम 40-50% का ब्लड लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं विदाउट डाइंग. अगर किसी में sympathetic system काम नहीं करेगा तो 10-20% पे ही the person will have the cardiac output and the blood pressure falling down to zero. So thanks to the sympathetic system which maintains the cardiac output to combat with the effects of blood loss up to as high as levels 40-45% तक, right? Then this particular heading, इसका take home message है greater effect of sympathetic nervous system in maintaining the arterial pressure than in maintaining the cardiac output. So basically arterial pressure is the focus of sympathetic system. So total peripheral resistance भी बढ़ रही है. यहाँ point number 1 हमने देखा था ना, there was constriction of the arteries and the arterioles. So there was increase in total peripheral resistance जिससे arterial pressure बढ़ेगा. There was increase in venous return जिससे भी arterial pressure बढ़ेगा. Obviously cardiac output भी बढ़ता है by the sympathetic system, but the more focus is on increasing the arterial pressure. So that's the take home message from the whole heading. मैंने आपको बताया कि अब ये जो इतना, और फिजियोलॉजी में बेसिकली आपको चैप्टर्स पढ़ने की ट्रिक यही है कि हर हेडिंग में जो की मैसेज है वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए. अदरवाइज पूरा पढ़ लें समझे ना तो कोई फायदा नहीं है. सो दिस हेडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ कोरोनरी एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो बाय रिफ्लेक्सेस. A special value of the maintenance of normal arterial pressure even in the presence of decreased cardiac output is protection of the blood flow through the coronary and the cerebral. देखिए ये दो आपके की एरियाज हैं. So blood supply to the heart, coronary blood vessel, and blood supply to the brain, the cerebral circulation, they have to be maintained. क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से अर्ली शटडाउन हो गए तो पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा. So they have to be maintained for at least a longer time. तो जो sympathetic system है, it does not cause significant constriction of these vessels. बाकी peripheral vessels को वो constrict करता है, लेकिन coronary vessels और cerebral vessels को वो constrict नहीं करता because we cannot afford this. Okay. In addition, both the vascular beds, local blood flow autoregulation is excellent. Therefore, they actually kind of dilate or maintain the lumen ताकि blood supply to the brain and heart maintained रहे. Therefore, blood flow through the heart and brain is maintained essentially at normal levels as long as the arterial pressure does not fall below 70 millimeter. 100 से 70 तक चला जाता है और blood और heart और brain की blood supply disturb नहीं होती. Okay? That's the take home message of this particular heading कि coronary blood supply and cerebral blood supply are maintained. आपका blood pressure 70 तक भी चला जाए, they are okay. Now the progressive and non-progressive hemorrhage. मैंने ये आपको दो terms समझाई तो थी stages of shock में. There is a progressive and there is a non-progressive. So non-progressive का मतलब basically ये है कि the body is trying to compensate by mechanisms such as sympathetic system for example, and then there is a progressive stage. Progressive stage में ये है कि आप drugs ले रहे हैं, drugs काम भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो disease है वो progress कर रही है.
ओके, सो यहाँ कुछ एनिमल्स स्टडीज की बात की है. फिगर 24.2 में shows an experiment that demonstrate the effect of different degrees of sudden acute hemorrhage on the subsequent course of arterial pressure. The animals in this experiment were anesthetized and bled rapidly. यानी एनिमल्स को टेबल पर डाल के एनेस्थीसिया दिया गया और उनमें ब्लीडिंग करवाई गई until their arterial pressure fell to different levels. यानी किसी एनिमल में आर्टियल प्रेशर किसी लेवल तक डिक्रीज हुआ, इतनी ब्लीडिंग कराई, किसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कराई, किसी में बहुत कम ब्लीडिंग कराई, इस तरह. सो जिसमें जितनी ब्लीडिंग हुई उस हिसाब से ब्लड प्रेशर फॉल करेगा. The animals whose pressure fell immediately to no lower than 45 millimeters of mercury all eventually recovered. The recovery occurred rapidly if the pressure fell only slightly. That is the group 1. So if you look at the diagram here, this is the time in minutes and this is the arterial pressure percentage of control value. So this is group 1. Group 1 में arterial pressure कम, यानी इसमें कम bleeding करवाई obviously. So there is कम bleeding and कम loss of blood pressure. So you see here. तो इसमें फॉरन रिकवरी हो गई. सो इफ देयर इज लेस ब्लड लॉस देयर इज इमीडिएट रिकवरी. ग्रुप 6 को देखिए, देयर इज ह्यूज ब्लड लॉस, ह्यूज ड्रॉप डाउन ऑफ द आर्टेरियल प्रेशर एंड देयरफॉर द रिकवरी इज आल्सो नॉट गुड. यू सी द पर्सन गोज डाउन 180 मिनट में द पर्सन इज गॉन. सो ग्रुप 6 इज द वन जिसमें इतनी ब्लीडिंग करवाई गई है कि प्रेशर फेल बिलो 45 एंड देन द रिकवरी इज नॉट गुड. सिंपल अगर इस पूरे को मैं समराइज करूं तो अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है और थोड़ी ब्लीडिंग होती है द पर्सन विल रिकवर क्विकली, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है द पर्सन विल रिकवर वेरी वेरी लेट और विल नॉट रिकवर. ये तो कॉमन सेंस की बात है ना. बहरहाल उसको फिजियोलॉजी में तो ये नहीं बोलेंगे कॉमन सेंस, फिजियोलॉजी में आप ग्राफ बना के चीज़ को प्रूव करेंगे. सो दिस एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली डेमोन्स्ट्रेट दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन रिकवर एज लॉन्ग एज द डिग्री ऑफ हेमरेज इज नो ग्रेटर देन अ सर्टेन क्रिटिकल अमाउंट. Crossing this critical threshold may by even a few millimeters the person will have a progressive shock and the person will die. That is, the shock itself causes still more shock. मतलब ये है कि अगर किसी के हार्ट में कोई भी रीजन से हेमरेज हुआ है, पहले ही शॉक की कंडीशन है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा और शॉक की कंडीशन फर्दर शॉक. नॉन प्रोग्रेसिव शॉक का है कॉम्पनसेटेड मैकेनिज्म. इफ शॉक इज नॉट सीवियर इनफ टू कॉज इट्स ओन प्रोग्रेशन, यानी अभी ये जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे इसमें देयर इज सीवियर ब्लीडिंग, सीवियर हेमरेज एंड प्रोग्रेसिव शॉक, द पर्सन डाइज. बट इफ द बॉडी स्टार्ट्स कॉम्पनसेशन, there are several factors that you need to know. The factors that cause a person to recover from the moderate degree of shock are negative feedback control mechanisms of circulation that attempt to return the cardiac output back to normal, such as baroreceptor reflex. आपको पता है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन होता है there is an elicitation of baroreceptor reflex. It leads to powerful sympathetic stimulation. Sympathetic stimulation होगी तो तीन चीजें होंगी. There will be increased total peripheral resistance जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. There will be increased venous return because it causes vasoconstriction, and the third effect will be increased cardiac output because sympathetic system directly stimulates the heart. So baroreceptor activated by falling blood pressure. Then central nervous system में भी कुछ ना कुछ ischemia होगा ना, उस ischemia की वजह से there is ischemic response which elicits more powerful sympathetic. तो यहाँ भी sympathetic system activate हुआ, इधर दोबारा activate हुआ. Then there is reverse stress relaxation of the circulatory system, ये हमने पहले भी बात की थी, which causes the blood vessels to contract around the diminished blood volume so that the blood volume that is available more adequately fills the circulation. So already blood loss हुआ है sympathetic system की वजह से, the vascular system goes a little narrower ताकि जो वॉल्यूम, जो कम सा वॉल्यूम रह गया. यानी ये ऐसी बात है कि अगर आपके पास एक ग्लास है, बड़ा ग्लास है, उस बड़े ग्लास में इतना थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, अब आपको ये ज़्यादा ग्लास खाली लग रहा है ना, लेकिन अगर आप एक छोटा सा इतना सा ग्लास ले लो, सेम अमाउंट ऑफ पानी इसमें डाल दो तो अब लगेगा एक ग्लास भरा हुआ है. सो बेसिकली आपने किया ये कि ग्लास का वॉल्यूम कम कर दिया है, तो अपेरेंटली देखने में सेम लिक्विड आपको भरा भरा ग्लास लग रहा है. बिल्कुल ऐसे ही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जब ब्लड लॉस हो जाता है तो ऐसा है कि बड़े ग्लास में थोड़ा सा ब्लड पड़ा हुआ है, अब आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें अगर ब्लड वेसल्स को तो ग्लास छोटा हो गया तो फिलिंग प्रेशर बढ़ जाता. देन अनदर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय द किडनी, बिकॉज कई दफ़ा अब हमने ये बात की है कि जब ब्लड प्रेशर कम होगा जैसे कि हेमरेज की वजह से, सो ब्लड सप्लाई टू किडनी विल बी रिड्यूस्ड एंड किडनी विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसकी वजह से मोर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, एंड दैट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. Then the body increase secretion of antidiuretic hormone, so urine will not be produced, water will be conserved, blood pressure will be raised.
There will be norepinephrine, epinephrine increase in the blood by adrenal medulla, and there will also be other compensatory mechanisms जो volume को bring back to the normal. For example, absorption of large quantities of fluid from the intestinal tract, from other spaces of the body into the circulatory system, and the person feel thirsty or would like to drink more water, that sort of thing. ये तमाम आपकी बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो शॉक की कंडीशन जनरेट हुई थी, यानी जो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ था, वो दोबारा रेगुलेट हो और अप हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ द बॉडी. दीज आर ऑल द कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज. सो एज फार एज द कॉम्पनसेशन इज वर्किंग, वी से दिस इज नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, यानी ये शॉक अभी कंट्रोल में है, काबू में है, मामला इतना खराब नहीं है. The sympathetic reflexes and increased secretion of catecholamines by the adrenal, epinephrine or epinephrine, help toward bringing about the recovery because they become maximally activated within 30 seconds to few minutes after the hemorrhage. So that's an interesting story ना, अभी ऊपर जो हमने पढ़ी. अब ये पूरा भी should make sense to you कि whenever there is decreased cardiac output, it leads to decreased artery pressure, systemic blood flow कम हो जाता है, and that causes a lot of different things. Okay, ये चैप्टर के एंड में देखेंगे इसको दोबारा, ताकि पूरी पिक्चर जब आपके सामने हो तो ये चार्ट इजीली समझ में आएगा. राइट, द एंजियोटेंसिन वैसोप्रेसिन मैकेनिज्म्स एज वेल, लेकिन दे रिक्वायर अबाउट 10 to 60 minutes to respond. The quickest one is the adrenal medulla. Within 30 seconds of hemorrhage, catecholamines level go high in the blood. Now, the progressive shock caused by vicious cycle of cardiovascular deterioration. That's another important heading जिसमें हमको बात ये बेसिकली करनी है कि जो प्रोग्रेसिव शॉक है जिसमें अब कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स काम नहीं कर रहे हैं, देयर आर थिंग्स विच विल किक इन विच विल डिटीरियोरेट द फंक्शन. यानी आप अगर इवन ड्रग्स भी ले रहे हैं तो सिस्टम अब खराबी की तरफ जाएगा, यानी कार्डियक डिप्रेशन फॉर एग्जाम्पल. व्हेन द आर्टेरियल प्रेशर फॉल्स लो इनफ, कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, तो हार्ट को खुद ही ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो देयर विल बी कार्डियक डिप्रेशन. सो दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस हेडिंग, राइट? And then there is vasomotor failure. In the early stages of shock, various circulatory reflexes causes intense activity of the sympathetic nervous system that we just discussed. And activation of the sympathetic system basically is the compensation या compensatory mechanism. And this happens. This activity helps delay depression of cardiac output and especially help prevent the decreased arterial pressure. So this is a compensation. However, there comes a point when the diminished blood flow to the brain vasomotor center depresses the center so much that it too becomes progressively less active. And then, during the first 4 to 8 minutes, complete circulatory arrest of the brain causes most intense sympathetic discharge. But by the end of 10 to 15 minutes, the vasomotor center becomes so depressed that no further evidence of sympathetic discharge is there. And therefore, the vasomotor system kind of fails. तो बात ये है कि जब इनिशियल शॉक का सिनेरियो होता है तो देयर इज इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, बट विद persisting cause and the persisting shock, the sympathetic activity is no more there. So आपका जो compensation है वो basically fail हो जाता है. Then release of toxins by ischemic tissue. अब जो ischemic tissue है वो dying tissue है, इसमें से बहुत सारे toxins निकलते हैं जो further deteriorate करते हैं shock को, and these are for example the endotoxins. Or endotoxin can cause further cardiac depression. Endotoxins is released by the bodies of dead gram-negative bacteria, for example in the intestine. Diminished blood flow to the intestine often causes enhanced formation and absorption of toxin substances. They come in the circulation and then causes cellular metabolism to be disturbed, despite inadequate nutrition of the cells, which has a specific effect on the heart, causes cardiac depression. पूरा बॉटम लाइन इस हेडिंग का ये है कि डाइंग टिश्यूज में से बैक्टीरिया प्रोड्यूस मोर एंडोटॉक्सिन्स एंड दे गो टू द हार्ट एंड डिस्ट्रॉय द फंक्शन ऑफ द हार्ट. सो इट ऑब्वियसली फर्दर डिटीरियोरेट द कंडीशन. सो हम बात कर क्या रहे हैं, हमारी सारी बात का फोकस है कि प्रोग्रेसिव शॉक में देयर आर थिंग्स विच विल गो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिपेयर, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कॉम्पनसेशन. सो कार्डियक डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वैसोमोटर फेलियर शुरू हो जाएगा. अब ये सारी वो चीज़ें हो रही हैं जो अब बात खराबी की तरफ जा रही है, एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रोग्रेसिव फेलियर. Now generalized cellular deterioration will start because अब इस्कीमिया है ना, शॉक है तो लिवर काम करना छोड़ेगा, किडनीज काम करना छोड़ेंगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, ये सारे मसले शुरू होंगे. सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एटीपी चाहिए और ब्लड सप्लाई तो है नहीं टिश्यूज को, सो एटीपी नहीं बनेगा, सेलुलर सिस्टम डैमेज होंगे, एटीपी नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम नहीं करेगा, सो सेल्स की ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा, सेल्स विल स्वेल अप एंड दे विल शो द साइंस ऑफ नेक्रोसिस.
ठीक है. Mitochondrial activity in the liver cell will be disturbed. Obviously, lysosomes in the cells is widespread tissues begin to break open, and इसकी वजह से hydrolysis release होंगे और cells की digestion शुरू हो जाएगी. Cellular metabolism of the nutrients and such as glucose eventually becomes greatly depressed. In the last stages of shock, the action of some hormones are depressed as well, including almost 100% depression in the function of insulin. So you see, everything is going down. Things are, moving towards dangerous scenario. All these effects contribute to further deterioration of many organs such as liver, lungs, and heart. And what else do you expect? The person is moving towards death. Then there are patchy areas of necrosis caused by patchy blood flow in different organs. इस पूरी हेडिंग का बॉटम लाइन ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स विल हैव इस्केमिक रिस्पॉन्स और वहाँ नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल लंग्स में अगर ये होता है तो दिस इज कॉल्ड शॉक लंग सिंड्रोम. सो लंग डज नॉट रिसीव प्रॉपर ब्लड सप्लाई, देयर आर पैची एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. देयर विल बी एसिडोसिस इन द शॉक. Why? Because metabolic derangements that occur in the shocked tissue can lead to acidosis throughout the body. They result from poorly delivered oxygen to the tissue, which greatly diminishes oxidative metabolism of the foodstuff. When this occurs, the cells obtain most of the energy by anaerobic process and it produces lactic acid. देखें ये एक टिश्यू है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सो ऑक्सीजन मिलती तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती, एटीपी बनता, लेकिन अब अपने सर्वाइवल के लिए ये करता है anaerobic glycolysis and it produces lactic acid. ये lactic acid blood में रिलीज होता है, there is decreased pH and there is lactic acidosis. So shock is associated with acidosis. That's another metabolic problem that you have to deal with. Then positive feedback deterioration of tissues in shock and vicious cycle of progressive shock. ये देखें, अब मामला ख़राब तर होगा, यानी देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई इनिशियली, देन एसिडोसिस हो गया, हार्ट ने काम छोड़ दिया, लंग्स में नेक्रोसिस हो गई, लिवर गड़बड़ कर रहा है, सो एक विशियस साइकिल शुरू होगा. All the factors just discussed can lead to further progression of shock, which is called a positive feedback loop. So it further, इसको हम vicious circle भी कहते हैं कि चीज़ें सही होने के बजाय मजीद से मजीद ख़राब होंगी. ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात मुझे डिस्कस करनी है, that is a heading of irreversible shock. So we talked about progression कैसे हो रही है शॉक की. सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस की compensation क्या है. Compensation में it was the sympathetic system which was working properly ना, so that was compensation. Then we talked about progressive problems, cardiac abnormality, heart काम करना छोड़ेगा, lungs, liver, ये सब चीज़ें. Now the irreversible shock. Now that's a state जहाँ से अब वापसी almost नामुमकिन है. So after shock has progressed to a certain stage, transfusion or any other type of therapy become incapable of saving the person's life. The person is then said to be irreversibly at this stage of shock. Okay, the circulatory system is now gone. So अब आप transfusion करते रहो, कुछ भी करते रहो, there is no recovery back to the normals. The cardiac output does not go to the normal scenario. That's the end stage. Okay. So depletion in cellular high energy phosphate reverses in irreversible shock. Basically इसका मतलब ये है कि you have low ATP in the cellular machinery. देखें cells के अंदर अगर ATP नहीं होगा और ATP is the high energy phosphate, अगर इसके depletion तो फिर अब मामला गड़बड़ है. अब the person is moving towards a state of a true irreversible shock and death becomes almost inevitable. The high energy phosphate reverses the tissue of the body, especially in the liver and the heart, are greatly diminished in the severe shock. So ATP नहीं है ना cells में, so high energy phosphates are absent. Essentially, all the creatine phosphate has been degraded, and almost all the adenosine triphosphate has downgraded to adenosine diphosphate or monophosphate, eventually adenosine. So basically the cell does not have ATP. Cell के पास ATP नहीं है, ये मसला है. Much of this adenosine then diffuses out of the cell into the circulating blood and is converted into uric acid, a substance that cannot re-enter the cells to reconstitute the adenosine phosphate system. New adenosine can be synthesized at a rate of only about 2 systems, so it is not helpful. Thus, one of the most devastating end result in the shock, the one that is perhaps most significant to develop the final stage of irreversibility, is when there is depletion of the high energy compounds. So that is the major end story for the person's life. So if there is no ATP, the person is going to go die. Now, another scenario that we need to discuss is the hypovolemic shock, which is caused by plasma loss. It's not the blood loss this time. Loss of plasma from the circulatory system, even without loss of red blood cell, can also sometimes cause
decrease in the volume and shock. Severe plasma loss किन conditions में होता है? Either intestinal obstruction. It may cause severely reduced plasma volume. Distension of the intestine in intestinal obstruction partly blocks the venous blood flow. तो venous blood heart में नहीं जाएगा तो cardiac output कम हो जाएगा. So that's one thing which happens, which increases the intestinal capillary pressure, causing fluid leak from the capillary into the intestinal wall. So there is intestinal edema also, and also in the intestinal lumen there is liquid leakage. So plasma कम हो जाता. Because of the lost fluid has high protein content. The result is reduced total blood plasma protein as well as reduced plasma volume. So, intestinal obstruction mein there can be hypovolemic shock. Okay. Then another scenario that you need to remember is the scenario of severe burns. Acha, burns may also through the damaged skin you lose a lot of plasma, sometimes to an extent which is enough to cause hypovolemic shock. Okay. So the hypovolemic shock that result from the plasma does has almost the same characteristic as the shock caused by hemorrhage. तो अभी जितनी बातें हमने की हैं, because we are talking about hypovolemia. अब hypovolemia या bleeding की वजह से हो या plasma loss की वजह से हो, whatever the cause is, they have the same physiological and pathological effects. Loss of fluid from all fluid compartments of the body is called dehydration. This condition can also reduce the blood volume and cause hypovolemic shock. So dehydration, such as for example excessive sweating, if you are working quite hard, in a very humid and hot environment. So excessive sweating can cause dehydration and hypovolemic shock. Diarrhea or vomiting is another scenario. If somebody is not taking fluid adequately, or if there is destruction of the adrenal cortex, because then you don't have aldosterone, and no aldosterone means there is problem with sodium and water reabsorption. So all these condition also leads to hypovolemia. So basically आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि what are the different causes of hypovolemia, it can be hemorrhage के बाद it can be plasma loss. After plasma loss, all these can be different causes as well. Okay. Now, trauma can also cause hypovolemic shock. One of the most common cause of circulatory shock is trauma to the body. Often, the shock results simply from hemorrhage. Trauma से ज़ाहिर है hemorrhage होगा और hypovolemia होगा, है ना? But it can also occur even without hemorrhage, because extensive contusion of the body can damage the capillaries sufficiently to allow excessive loss of plasma into the tissue. यानी ये आपका हाथ है, for example, यहाँ पे severe trauma है और external bleeding नहीं हो रही, लेकिन internally capillaries सारी disturb हो गई हैं और अब इस particular area में blood इधर उधर tissue में तो plasma निकल गया है, लेकिन blood supply to the tissue is disturbed, eventually shock. Okay. Various attempts have been made to implicate toxic factors released by the traumatized tissue as one of the causes of shock after, but this is all theoretical stuff. But I think we did quite a lot of theoretical discussion in there under the heading of hypovolemic shock. Hypovolemic shock का मतलब है ऐसा shock जो वॉल्यूम की कमी की वजह से हो रहा है, और उसकी डिफरेंट हमने फ्लेवर्स और डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस किए. नाउ हाइपोवॉलेमिक शॉक के बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ शॉक जो मुझे डिस्कस करनी है, दैट इज नोन एज न्यूरोजेनिक शॉक. देखिए, न्यूरोजेनिक शॉक का बेसिकली मतलब है देयर विल बी इंक्लूज वैस्कुलर कैपेसिटी. जरा पढ़ते हैं इसको. शॉक ओकेजनली अकर्स विदाउट एनी लॉस ऑफ द ब्लड. यानी इस केस में न्यूरोजेनिक शॉक में ब्लड लॉस नहीं है. इंस्टेड देयर इज वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज प्रॉब्लम सो मच दैट even the normal amount of blood is incapable of filling the circulatory system adequately. One of the major causes is sudden loss of vasomotor tone, or that leads to massive vasodilation. That's the problem here. So here is your lovely beautiful heart and it receives the blood by the veins. ऐसे ही होता है ना. अब ये जो वेन्स हैं अगर डायलेट होगी, इतनी बड़ी हो जाए या इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो सारा ब्लड यहीं पड़ा रहेगा, हार्ट में ब्लड जाएगा ही नहीं. हार्ट वेट कर रहा है ब्लड आने का, ब्लड आ ही नहीं रहा तो ब्लड पंप क्या होगा. सो ये हो गया ना शॉक. अब ये शॉक हो रहा है बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग द नॉर्मल टोन ऑफ द ब्लड वेसल, बिकॉज हायर सेंटर से जो नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ टोन है अब वो डिस्टर्ब्ड है. मोटर एरिया जो है वो किसी वजह से इट हैज बीन स्क्रूड, तो आपकी वेन्स डायलेट हो गई हैं. सच शॉक इज नोन एज न्यूरोजेनिक. कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई मसला नहीं है, बट न्यूरोजेनिक कंट्रोल डिस्टर्ब्ड है. The role of vascular capacity ये तो हम पढ़ चुके हैं. So that's basically the neurogenic shock. अब इसकी causes सुने. Deep general anesthesia. If you give anesthesia to somebody इतना ज़्यादा कि toxic effects हो रहे हैं उसके, the person can enter into neurogenic shock. Spinal anesthesia. Brain damage अगर किसी का हो गया, because if there is brain damage then the person is not controlling the tone of the blood vessel. So basically neurogenic shock is associated with issues of CNS control of the venous tone.
अगर ये मामला खराब हो गया तो वेन्स ये खुल के डायलेट हो जाएंगी, सारा ब्लड इनमें पड़ा रहेगा और द पर्सन विल नॉट रिसीव ब्लड इनटू द हार्ट, हार्ट में नहीं आएगा तो पंप क्या होगा, एंड हेंस द सिचुएशन ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक. नाम न्यूरोजेनिक है इसीलिए बिकॉज द प्रॉब्लम लाइज इन द CNS. Then there is another category which is called anaphylactic shock and histamine shock. This is associated with allergy. So anaphylaxis is an allergic condition in which the cardiac output and the arterial pressure often decreases drastically. The condition ये हम anaphylaxis discuss करेंगे anaphylaxis में अलग ही chapter है. It results primarily from antigen-antibody reaction that rapidly occurs after the antigen exposure, and the person के basophils become activated and they release a lot of histamine and histamine-like substances. अब ये क्या करते हैं? ये venous dilation करते हैं. So histamine causes serious venous dilation, और venous dilation होगी तो heart में blood नहीं जाएगा, यानी सारा मामला shock वाला. Then there is also dilation of the arteriole. Arteriole बढ़ जाएगा, blood pressure कम मतलब shock का तरह का मामला. And then there is greater increase in permeability, so of capillaries. So जब capillary की permeability बढ़ जाएगी तो there will be fluid loss into the tissue, edema, and overall decreased capillary filling pressure within the system, vascular system, and the tissue will be shocked. So this is all because of histamine. और ये शुरू कैसे हुआ? एलर्जी से स्टार्ट हुआ ये सारा मामला. Now इंट्रावेनस अगर किसी में इंजेक्शंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन डाल दें, इट विल कॉज हिस्टामिन शॉक. वाह क्या बात की है, बट दैट्स वेरी यार क्रिमिनल थिंकिंग है ना. देन देयर इज अनदर कैटेगरी व्हिच इज नोन एज सेप्टिक शॉक. So septic shock refers to bacterial infection widely disseminated to many areas of the body, with the infection being carried through the blood from one tissue to the other. There are many varieties of septic shock, and it can be caused by gram-positive bacteria, also by gram-negative bacteria, or it is very important because इसमें cardiogenic मसला नहीं है. There is some issue के body में इतना inflammatory environment propagate कर गया है कि that is leading to shock. और कुछ इसके वर्जन्स और फ्लेवर्स आपको मुझे बताने हैं. सो फॉर एग्जांपल these are the causes of septic shock. Peritonitis, inflammation or infection of the peritoneal layers that can lead to septic shock. Peritonitis resulting from rupture of GI system. Suppose किसी को for example intestinal tuberculosis है या typhoid perforation है. So if there is perforation in the GI tract, the contents will go out in the peritoneum and that will lead to peritonitis, and that can also lead to shock. Then there is generalized body infection. Even skin infection can lead to septic shock. Gangrene है अगर किसी को किसी भी जगह में बॉडी में, so that is also an area of high bacterial proliferation. Then infection is spreading into the blood from the kidney or UTI. So any source of infection in the body, and it can lead to septic shock. और उसके features क्या क्या है? The person presents with very high fever because there is infection obviously. Vasodilation. Because of the infection and toxins produced, there is vasodilation. So vasodilation will reduce the total peripheral resistance and the blood pressure will fall down. There is high cardiac output, not low cardiac output. But this high cardiac output, perhaps half of the patients में होता है, caused by arterial dilatation and increased metabolic rate of the body. So there is cardiac output increment. Sludging of the blood because of clotting, platelet aggregation. Development of clotting all over the body, which is called DIC, disseminated intravascular coagulation. In the early stages of septic shock, the patient usually does not have signs of circulatory collapse, but later on, जब progressive stage में जाएगा shock, the person may present to you with typical signs and symptoms of shock. So हम बात क्या कर रहे हैं? हमने पहले बात की hypovolemic shock की, फिर हम बात कर रहे हैं different other categories of shock, जिसमें neurogenic shock, then we talked about allergy वाला shock, then septic shock. Then another category is to talk about circulatory arrest. पहले मैं ये कराऊंगा, उसके बाद we will talk about the physiology of the treatment. Now circulatory arrest का क्या मतलब है? The circulatory arrest basically a condition closely allied to the circulatory shock is circulatory arrest, in which all the blood flow stops. This condition can occur, for example, as a result of cardiac arrest or ventricular fibrillation. मैं आपको I'll take you back to a diagram. और वहाँ मैं आपको बताता हूँ where is the scenario of circulatory shock. So let me take you ये वाली. So here, this is where we say is the state of circulatory shock. You see, no cardiac output, no blood pressure, everything is standstill. So अगर shock इतना severe है कि it has gone down to the irreversible stage, then we call it circulatory shock. अब इसमें या तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है या शॉक इतना प्रोग्रेस कर गया है कि there is no arterial pressure.
In case of complete cardiac arrest, well, this is not important. Now the person is basically going to be dead because we are not talking about any physiology here. We are talking about circulatory arrest. The person is gone. Okay? Unless in the very early stages, the person is resuscitated, which means ventilatory support and mechanical support of breathing. अब सर्कुलेटरी अरेस्ट जब होता है तो इसका इफेक्ट ब्रेन पर क्या है, ये टाइमिंग्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट है. A special challenge to the circulatory arrest is to prevent the detrimental effect of the arrest on the brain. In general, 5 to 8 minutes of the total circulatory arrest can cause at least some of the damage in the brain, and if it is more than 10 to 15 minutes, it permanently destroys the mental capacity. So this time, 5 to 8 minutes, yeah, maximum 15 minutes, critical time period, there will be loss of brain function. For many years, it was thought that this detrimental effect on the brain was caused by the acute cerebral hypoxia that occurs during the circulatory arrest. Obviously, there will be hypoxia to the brain. However, experiments have shown that if the blood clots are prevented from occurring in the blood vessels of the brain, this will also prevent much of the early deterioration. Well, this is all very much theoretical discussion. ये अब एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं जिसमें up to 30 minutes the experimental animals के brain में कोई functional defect नहीं हुआ अगर coagulation of the vessel. So if this is the brain, इसकी तरफ blood vessels जा रही हैं. So early on there is DIC, coagulation in the brain vessels. अगर streptokinase देके इसको रोक लें तो 10-15 मिनट नहीं 30 minutes तक brain survive कर सकता है. But that's all theoretical stuff. Cardiac arrest या circulatory arrest, if not taken very very seriously, very very urgently, then the person is gone. Okay. Now what I also need to spend a couple of minutes on is the physiology of the treatment. So obviously, the most common form of shock that we have been discussing about is the hypovolemic shock, जिसमें वॉल्यूम कम हो जाता है. So वॉल्यूम कम होगा तो आपको वॉल्यूम रिप्लेस करना पड़ेगा. This is what we call the replacement therapy. और अगर हेमरेज हुआ है बंदे में, हाइपोवॉल्यूमिया का कॉज हेमरेज है, तो बेस्ट पॉसिबल थेरेपी विल बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड. यानी बंदे को आपने होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है इसकी बॉडी में, बिकॉज ब्लड लूज हुआ है ना. और अगर प्लाज्मा लूज हुआ है तो प्लाज्मा आपको रिप्लेस करना चाहिए. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. अगर ब्लड अवेलेबल नहीं है, सच एज अंदर बैटलफील्ड कंडीशन या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी इलाके में अर्थक्वेक आ गया और वहां पे होल ब्लड possibly available ही नहीं है, so there are some alternate also available. For example, in this situation plasma can be given. Plasma में जाहिर है there are no red blood cells, क्योंकि whole blood में red blood cells होते हैं, plasma में नहीं होते. Even there is no red blood cell in the plasma. Plasma देने से volume restore हो जाता है and it is helpful to certain extent. ओके अच्छा, अब कहीं कहीं होता है कि प्लाज्मा भी अवेलेबल नहीं होता. सो उस सिनेरियो में देयर आर सम आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स आल्सो अवेलेबल, और उनमें एक सॉल्यूशन जिसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज द डेक्स्ट्रैन सॉल्यूशन व्हिच इज अ प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट. सो किसी को व्हाट विल बी अ गुड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट जो आपके वैस्कुलर सिस्टम के अंदर रहे, लीक करके टिश्यूज में ना जाए, और उसका आयोनिक कंपोजिशन आपके प्लाज्मा या जो वैस्कुलर कंपोनेंट है उससे ज्यादा डिफरेंट ना हो. एंड डेक्स्ट्रैन इज वन ऑफ सच सॉल्यूशंस. ओके, सो इट हैज अ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट and it's a large polysaccharide. It stays in the vascular system, therefore it is a good substitute for plasma if you want to expand the blood volume immediately. अब इसके कुछ toxic effects have been reported, but even then it is worth using if there is no whole blood available. If there is no plasma available, then that's what it is. Okay. Now, the second type of shock in which sympathomimetic drugs are valuable is the anaphylactic shock. So, anaphylactic shock में what we can also, actually we skipped this section. So, ये मुझे पहले, sorry. So, treatment for neurogenic shock. तो ये तो था treatment for hypovolemic shock, है ना? इसमें आप blood दे रहे हैं, plasma दे रहे हैं, dextran दे रहे हैं. अब अगर neurogenic shock है, neurogenic shock में problem क्या था? The CNS was not working. इसकी वजह से जो veins थी वो ऐसे बड़ी बड़ी हो गई थी और सारा blood pool कर रहा था veins के अंदर. That was the problem. यहाँ पर sympathomimetic drugs can be used. These drugs include norepinephrine, epinephrine, and they exert their effect and they try to reverse the neurogenic shock. अब ये जो sympathomimetics हैं, they can also be used in anaphylactic shock because जो vasodilation हो रहा है ये जाके उसको रिवर्स करेगा. यहाँ भी रिवर्स करेगा, यहाँ veins dilate हो रही थी, so sympathetic system will constrict the vein, increase blood flow to the heart. Anaphylactic shock में भी यही problem था, there was vasodilation. तो sympathetic system जाके act करेगा और इसको constrict करेगा. Sympathomimetic drugs have not been proved to be valuable in hemorrhagic shock because hemorrhagic shock में blood loss हो रहा है, vasodilation का issue नहीं है, therefore these don't work here. Okay.
Now, these are some other therapies where you give oxygen to the patient, you tilt the head down, or this maneuver helps keeping the blood pressure and the cardiac output okay. And when the pressure falls too low in most of the type of the shock, especially in hemorrhagic and neurogenic shock, placing the patient head at least 12 inches lower than the feet. इस maneuver में रखते हैं जिसकी वजह से venous return बढ़ता है heart का, तो it tries to restore the cardiac output. You give oxygen to the patient and you give glucocorticoids, life-saving drugs. Glucocorticoids, they are the adrenal cortex hormones that control the glucose metabolism, are frequently given in the patient with severe shock. Experiments have shown empirically that glucocorticoid frequently increases the strength of heart. That's why you give it in shock. Glucocorticoid stabilizes the lysosome in the tissue cells, therefore tissue lysis is prevented. Glucocorticoid might aid metabolism of glucose by the severely damaged cell. So, smooth supply of ATP and energy metabolism. That's why you give glucocorticoids. So that's all about this chapter. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. बहुत जल्द अपना ख्याल रखिए.